So the fifth definition is now, unfortunately, this is a word that we use in our daily lives. Right? Normally, we don't use displacement. So the meaning of displacement is very clear. Distance is something that we use in our daily lives, right? So meaning थोड़ा सा similar ही है. So this is the total length of the path followed by a particle, right? It is the total length of the path followed by a particle. So supposing that we have frame of reference, and supposing that the initial position vector of the particle is this, and supposing that final position vector of the particle is this. Therefore, this would be the displacement vector, right? RF minus RI. But the path of the particle may be completely different. This is the path of the particle. Right, now supposing that this final position vector is measured at, let's say t is equal to 5 seconds, and this is measured at t is equal to 0 seconds. क्या मतलब हुआ इसका? जब मैंने स्टॉपवॉच स्टार्ट किया तो पार्टिकल यहाँ पे था, और जब मैंने स्टॉपवॉच स्टॉप किया तो पार्टिकल यहाँ पे है, right? Please notice the difference. Please notice the difference. The displacement of the particle does not care about the path taken by the particle. The displacement of the particle is only concerned about the location of the particle at t is equal to 0 and t is equal to 5 seconds, right? Whereas the path of the particle is charting out, is showing us the actual path followed by the particle in the duration t is equal to 0 to t is equal to 5 seconds. So while measuring displacement, it is something like मैंने t is equal to 0 पे अपना आँख खोला, देखा पार्टिकल कहाँ है, और फिर अपना आँख बंद कर लिया, फिर t is equal to 5 seconds पे अपना आँख खोला और देखा पार्टिकल कहाँ है, और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक वेक्टर बना दिया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. लेकिन अगर मैं अपनी आँख खोले रखूंगा 0 से 5 सेकेंड्स तक, अब पार्टिकल का एक्चुअल मोशन कैसा हुआ, दैट इज गिवन बाय द पाथ ऑफ द पार्टिकल. So basically there are 3 ways of looking at the motion of a particle. The first way is that
you look at the motion macroscopically. That means you are only bothered about कि आप कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पे आपकी जर्नी खत्म हुई. प्लीज रिमेंबर, मैं शुरू और खत्म जो बोल रहा हूँ दैट स्ट्रिक्टली मीन्स आपने स्टॉप वॉच शुरू किया और स्टॉप वॉच को बंद किया. Okay, my statement does not mean that the particle was not moving before शुरू हुआ and the particle does not keep on moving after particle का motion खत्म हुआ. Right? Please remember this, that I am just looking at one portion of the overall motion of the particle. It may be कि जब मैंने स्टॉप वॉच शुरू किया तो वो भी शुरू हुआ और मैंने स्टॉप वॉच बंद किया तो उसका मोशन भी बंद हो गया. ऐसा हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है. So displacement is something which is looking at the overall motion. We are going to study the average velocity today, right? And we are going to study average acceleration. The word displacement, average velocity and average acceleration are macroscopic indicators of motion. They give us a macroscopic picture of motion. They are only bothered with the start and the end of motion, right? It's like your parents are only bothered, at least, I mean, technically, they should only be bothered about you leaving school and coming home. This particular रास्ते से आए, that detail may or may not be asked from you, right? School कितने बजे निकले, घर कितने बजे पहुंचे, that's it. That information is sufficient. So a macroscopic view of the motion is given by the quantities called displacement, average velocity, and average acceleration. Whereas the microscopic view, that means that I want to have knowledge about every moment in time in the duration of motion. The microscopic view is given by things called instantaneous velocity, instantaneous acceleration, that we will be studying in this definition wala part. So they tell us about every moment in time. आप स्कूल से निकले 2 बजे, 2 बज के 1 सेकेंड पे कहाँ थे, 2 बज के 2 सेकेंड पे कहाँ थे, 2 बज के 3 सेकेंड पे कहाँ थे, up till the time that you are reaching home, right? And somewhere in the middle, so the macroscopic displacement, average velocity, average acceleration. Average velocity, average acceleration क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे. Microscopic, instantaneous velocity and instantaneous acceleration, which again we'll discuss. Somewhere in the middle is this path of the particle, right? तो microscopic view के लिए हमें path of the particle चाहिए भी हो सकता है, नहीं भी चाहिए हो सकता है, दोनों possibilities. The path of the particle also requires some maths which we had left when we were studying calculus, but it is extremely rare maths. Therefore, I'll just tell you what it is, but we won't discuss it in detail. But before I tell you the maths, remember that the distance traveled is always greater than or equal to the magnitude of displacement, right?
when is distance traveled equal to the magnitude of displacement? So when motion is a straight line, distance is equal to magnitude of displacement. Is the statement correct or incorrect? When motion is a straight line, then distance is equal to Pakka. You sure? Who is absolutely sure? Straight line है ना? Partially correct. हाँ भाई प्रतीक्षा क्यों भाई partially correct क्यों है ये? Ah yes, yes. So if I travel in a straight line and if I come back like this, so अभी भी मैं straight line में चला. I never left the straight line, but the distance traveled. Okay, the distance traveled is this length. Whereas the displacement is this. Displacement, this is the so basically it means that you walk out of your building and you come back in a straight line. Your displacement will be 0, whereas the distance traveled will not be 0. Right? So the condition is that the motion should not only be a straight line, but it should be in one direction. So when motion is in a straight line and in one direction, that means reversal does not take place, right? You don't come back. Then the distance is equal to magnitude of displacement. Please remember this is important. Okay. What is not very important, but still. So we talked about, when we were doing calculus, we talked about the slope of the curve. We talked about the area under the curve. But we never talked about the length of the curve. Supposing that this is some graph and I want to find the length of the curve between x is equal to x1 and x is equal to x2. मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है. It should be something like this. So this is the curve like this, and I want to find the length of the curve between x equal to x1 and x equal to x2. So what I will do is, just like in calculus, all operations of calculus are basically having one meaning, that you are looking at a very small part
If you want to find the slope, you look at a small part, looks like a straight line. You want to find the area under the graph, you look at a small part, find the area under that small part, and then add up all the areas. Here also we look at a very small part between x and x plus dx, right? So this is the small part of the curve that we are looking at. And I will say that the length of this curve is dl. The length of this part of the curve is dl. Now I know that this is dx, and therefore this must be dy. So basically what I can do is that I can construct a little triangle where the hypotenuse of the triangle is the part of the curve that we are interested in, has a length of dl, and the base of the triangle will always be then dx, and the height will always be dy. And now what I can do is I can apply the Pythagoras theorem, and I can write dl square is equal to dx square plus dy square. And therefore I can write dl is equal to under root of dx square plus dy square. And then what I can do is that I can take dx common. If I take dx common, then I'll end up with 1 plus dy by dx, which is the slope whole square. And since the length of the curve is the sum of the little dl's, ये थोड़ा सा dl हो गया, फिर ये dl हो गया, फिर ये dl हो गया, तो सारे dl को अगर मैं ऐड कर दूंगा, so L is equal to the summation of dl. Another word or another way of summation is integration. So since the length of the curve is this, we get length of the curve is equal to integration of from x1 to x2 under root of 1 plus dy by dx whole square, ये whole square इसके अंदर है dx. Right now, very rarely will you have to invoke this. Very rarely इसको हमें. In fact, I can't remember any any question where ये करना पड़ेगा. Maybe in about 6 months' time, when we are studying rigid body dynamics, we December के around अपन पहुंचेंगे वहाँ पे. Maybe then we'll have to invoke this formula. हाँ लेक्चर में थोड़ा रिक्वायर्ड भैया. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. All DL will be of the same length? No, they will not be of the same. ये स्क्वायर रूट में नहीं है dx से. मैंने मतलब स्क्वायर रूट थोड़ा सा. ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. You don't need this. You can forget about this.
Whenever it is required again, I will remind you. The hint, of course, would be when we are talking about the length of a curve. Right? Whenever we are talking about the length of the curve, we will have to invoke this. Okay, chalo, आगे बढ़ते हैं. So the next definition that we have is that of average velocity. Right now, average sixth. Sorry. So the average velocity, like I said before, is an indicator of the overall motion, right? And the definition of average velocity, you already know. If we have a frame of reference, and in this frame of reference, particle moves from some initial position vector, some final position vector, then the average velocity, by the way, we have a new mathematical term here, new mathematical symbol. The symbol is this, right? And it simply means average. So whatever you have inside, it will be the average of that thing which is inside. Average force, तो मैं जहाँ डॉट डॉट बनाया वहाँ F लिख दूंगा, average force हो जाएगा. Average of, I don't know, average age, dot dot dot, age लिख दूंगा, right? So average velocity is equal to RF minus RI upon delta T. But this is equal to displacement upon delta T. Right? So this is the definition of average velocity. The symbol I have already used is this, and the units are length upon time. Right? So generally I'm going to choose SI units, therefore it will be meters per second, right? But it can be kilometers per hour or something else. Right? ये acceleration नहीं होता है, ये average velocity. Couple of things to point out here, and that is that please notice that this definition of average velocity is completely different from the definition of average of anything that you have seen up till now. अभी तक जो आपने एवरेज का डेफिनेशन सीखा है वो ये है कि सब कुछ ऐड कर दो और नंबर से डिवाइड कर दो, लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप वेलोसिटी ऐड कर दो और नंबर से डिवाइड कर दो, राइट? प्लीज नेवर एवर गेट कंफ्यूज्ड हियर. Average velocity is displacement upon time.
Displacement is a vector drawn from the initial position to the final position. So basically, average velocity is nothing but the displacement vector multiplied by a scalar. Right? I'm going to change the slide now. Average velocity is nothing but the displacement vector multiplied by a scalar. And what is the scalar? Scalar is 1 upon delta t, right? एक हाँ सर एवरेज वेलोसिटी मतलब जोर से बोल यार, मेरा शायद वॉल्यूम ऊपर है। एक मिनट, वॉल्यूम ऊपर करना है। हाँ, वॉल्यूम तो मेरा फुल है, जोर से बोल। सर एवरेज वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज का एवरेज ना? अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी बात ही नहीं किया है ना हमने। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ और चीज होती है, ये कुछ और चीज। बिल्कुल कंपैरिजन नहीं ड्रॉ करना है। जो पहले से सीखा हुआ है, जो पहले से सीखा हुआ है उससे कंपैरिजन नहीं ड्रॉ करना है। Okay, just सर look ये at जो दो वेक्टर्स हैं जो आपने ड्रॉ किया, तो डिस्प्लेसमेंट है ना, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट और जो रेड कलर का वेलोसिटी का तो मतलब रिलेट एक टाइम के उससे। क्या बोल रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये रेड वाला। वेलोसिटी वेक्टर तो बनाया नहीं मैंने। अच्छा सर, वेलोसिटी वेक्टर था ना। अभी बना रहा हूँ, रुक ना, चैन रख, जल्दीबाजी नहीं कर। और हाँ भाई जोहेब। सर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस है कि दोनों सेम ही हाँ, है? बहुत डिफरेंस है। एवरेज वेलोसिटी जो मैंने लिखा है वही है, और वेलोसिटी मैंने भी बताया नहीं क्या होता। ओके ओके। So average velocity is equal to the scalar 1 over delta t multiplied by the displacement vector, right? So this quantity is the displacement vector. This quantity is the scalar quantity, right? And this is the displacement vector. Okay, now what do we know about delta t? Since delta t is equal to the time interval in which this displacement takes place, it must always be a positive number. Always. Okay. Therefore, the direction of the velocity vector will always be equal to the direction of the displacement vector, right? Direction of the average velocity vector. एवरेज वेलोसिटी वेक्टर को निकालने के लिए हमारे पास दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनफैक्ट तीन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या क्या और क्या? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास तीन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पार्टिकल कहाँ था, पार्टिकल कहाँ है, और इस
हाँ, और इसके लिए समय कितना लगा, राइट? आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग. पार्टिकल कहाँ था, दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन वेक्टर. पार्टिकल कहाँ है, that means final position vector, and what is the time taken for the particle to travel from this initial position vector to the final position, right? Okay, so this is very important. The direction of the average velocity vector is the same as the direction of displacement. Now I can draw. So if this is the initial position vector, this is the final position vector, displacement is necessarily this red vector. And the average velocity vector must have the same direction as the red vector, but it may or may not have the same magnitude as the red vector. So the average velocity vector may be like this, or the average velocity vector may be like this. Because remember that the average velocity vector is nothing but the displacement vector multiplied by a scalar quantity, a positive scalar quantity. तो याद है हमने वेक्टर्स में किया था कि जब एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहता है, लेकिन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द नंबर दैट यू हैव मल्टीप्लाइड. इंक्रीज हो सकता है सोनल, या डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू, राइट? ठीक है, ओके, आगे बढ़े. Value of time can be negative, right? Value of time can be negative. The time interval can never be negative. Okay? Value, ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? Value of time can be negative. Interval can never be negative. मतलब मैं ये पूछ सकता हूं कि t माइनस t इज इक्वल टू माइनस 20 ईयर्स पे क्या हो रहा था. इसका मतलब ये है कि 2000 ईयर 2000 में क्या हो रहा था. t इज इक्वल टू प्लस 10 ईयर्स में क्या होगा. तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन है कि ईयर 2030 में क्या होगा. लेकिन जब दो इवेंट्स के बीच में टाइम इंटरवल मेजर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर अस इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ न्यूटन. Okay, so we want to do some questions here, which I hope you have already done. Question number 1. टाइम ट्रैवल नहीं करता है, ऐसा नहीं बोलेंगे. टाइम ट्रैवल तो यूज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ मतलब एक मिनट जस्ट एक मिनट. हाँ, पहले अपन जो एग्जाम्पल्स है उससे करेंगे. सो इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर
If you look at question number 3, 4, 5, ये एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन सबने कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5. Good. Chalo. So first I want you to do this question. Please take a screenshot. I will be going on to the next screen. Please take a screenshot. You could say.
Please solve for me 5 questions. Okay, please solve for me 5 questions. Start with the kinematics lecture 1, question number 3, 4, 5, and then यहाँ पे question number 1 and 2. नहीं भाई, example 3, 4, 5. Kinematics lecture 1, page number 6. Kinematics lecture 1, page number 6. जल्दी जल्दी करो. Kinematics lecture 1, page number 6, examples 1, 3, 4, 5, and then यहाँ पे जो मैंने question number 1 और question number 2 दिया. ऐसे ही कुछ आएगा. हाँ. Yeah, so example 3, 4, 5 are very, very easy. Example 3, initial position vector is 0. Final position vector is 3 I cap plus 4 J cap. Meters. Delta T is 15 minutes. Right? You can. I will prefer to write this. Well, you can write it in minutes, no problems.
You can also write it in hours if you wish. ये कितने घंटे हो जाएगा? 1/4 1/4 hours हो जाएगा. So the average velocity vector is equal to RF minus RI by delta T 3I cap plus 4J cap minus 0 by delta T is equal to 3I cap plus 4J cap meters per second. Meters per minute, or you can write it as 12y cap plus 16j cap meter per hour. Right? Units का खेल है, units का unit आपकी choice है. Both the answers are correct. You can keep it in minutes, you can convert it to hours, or if you want, you can convert it to seconds as well. Example number 4. RF is equal to, I don't know, ये निकालना है. RI is equal to 7I cap minus 24J cap. Now, if no units are given, okay, if no units are given, may happen, may not happen, should not happen really. But if no units are given, then you are free to assume your own units. And if you are free to assume your own units, then it should be SI units. Right? ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे light year और parsec लिखने लग जाए. Oh, sorry, हाँ, RI मैंने गलत लिख दिया. RI is given as 3I cap minus 7J cap. हाँ, बिल्कुल सही है. So the magnitude of velocity vector they have given as magnitude of average velocity they have given. अच्छा, units दिए हुए हैं. Magnitude of average velocity is given as 50 meters per second. And the direction of average velocity is given as 7I cap minus 24J cap divided by under root of 49 plus 24 square जब workout करेंगे, but it should come out to be 25. So this means that the average velocity vector is equal to the magnitude of the average velocity vector multiplied by the direction of the average velocity vector.
is equal to 7 I cap minus 24 j cap divided by 25. And we know that RF is equal to Ri plus average velocity vector into delta t. तो वेक्टर्स में जो मैंने वेलोसिटी वेक्टर यूज किया था RF minus Ri upon delta t is equal to velocity vector. That was in reality the average velocity vector. It was not really the velocity vector. It was the average velocity vector. So this would give us 3 I cap minus 7 j cap plus कितने टाइम के बाद निकालना है हमें 3 seconds plus 7 I cap minus 24 j cap into 6 क्योंकि 2 तो पहले से है यहाँ पे into 2 तो पहले से है यहाँ पे और डेल्टा t की वैल्यू 3 है ये into 6 हो गया. Therefore, the final position vector RF will be equal to 3 I cap minus 7 j cap plus 42 I cap minus 6 4 24 144 है क्या? Okay. Minus 144 j cap, which is equal to 45 I cap minus 151 j cap. Yeah. डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? What do you do to find direction? डायरेक्शन निकालने के लिए you have to divide the vector by its magnitude. So I have simply divided the vector by its magnitude. Okay, next question is example 5. And spy plane is being tracked by a radar at t is equal to 0. RI दिया हुआ है, RF दिया हुआ है, बहुत ही आसान है. Example 5 I'm not going to do. Example 5, you please try yourselves. Very, very easy. हाँ मतलब एग्जाम्पल 5 में RF RI डेल्टा टी सब दिया हुआ है, सीधा फॉर्मूले में डालना है. Okay, so now I want to do question number 1, which I have given, right?
please follow me very carefully. The question says that a particle travels along a straight line. This is basically example number 6. Right? I'm doing example number 6. अब example number 6 जो है मैंने average speed के बाद दिया हुआ है वहां पे. हाँ, this is the answer. Yes, Bob. So average speed के बाद दिया हुआ है, but average speed अभी मैं बताता हूँ. Average speed is basically what you have already studied in class 10th. Average speed is distance upon time, and average speed is drastically different from average velocity. Okay, except when we are talking about motion in a straight line. When we are talking about motion in a straight line, which is unidirectional, हाँ चेतन बिल्कुल सही. Then the average speed is equal to average velocity. Yeah, so I will do this problem. First, what you need to do is that you need to draw a diagram A, B. For those of you who have done this problem, for those of you who have done these problems, can you tell me why this problem is absolutely wrong? Theoretically speaking, this problem is absolutely incorrect. Why? नहीं, गलत. देखो. So between A and the midpoint, the speed of the particle is v1, and between the midpoint and B, the speed of the particle is v2. And we know that the average velocity vector is equal to displacement upon time. अभी रुक जा पार, अभी हाथ नीचे कर, अभी मेरे को ये करने दे पहले. Okay, average velocity vector is equal to displacement upon time. So displacement क्या है और time क्या है इस केस में? अबे बोल रहा हूँ, अभी रुक जा, नहीं मानेगा. बोल भाई, पार्थ कहाँ गया? सर इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम. हाँ मालूम, हाँ सही बोल रहा है, रुक जाना, मेरे को करने दे. बिल्कुल सही, absolutely right. So average velocity is equal to displacement upon time. Okay. ये हमारा डेफिनेशन है, ये तो हमें मालूम है. अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, राइट? बिल्कुल सही बात. वेरी नाइस. यस. What you have to now realize, and this will now become an integral part of problem solving, and unfortunately you may not have seen this regularly in class 9th and 10th, but here you will see this as a regular feature, that some of the data in the question might appear missing. For example, जब मैं ये क्वेश्चन लिखा था तो many people were asking time कहाँ है, time नहीं दिया है. So you will find that many things in a question are missing. In reality, they are not missing at all. Unless of course मैंने गलत question लिख दिया है, तो बात अलग है. So in reality, they are not missing at all. In reality, they are not going, if they are not given,
then they are not going to affect the answer. So in this case, time is not given. That means that time will not affect the answer. नहीं, गलत है थोड़ा सा वंश. अच्छा, इसके बाद से ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी नहीं दिया है भाई. इसका मतलब कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी आंसर को चेंज नहीं कर सकता है. ए और बी के बीच का डिस्टेंस इज समथिंग दैट द एवरेज वेलोसिटी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन. हाँ, गुड खुशी, यस एब्सोल्युटली राइट. So the permanent feature of the problems that you are going to face is that things will be unknown and you have to assume these unknown things, right? But these unknown things जो भी आप assume करेंगे वो आंसर में अपीयर नहीं होना चाहिए. Okay, you cannot assume in this question the distance between AB to be x, and then in the answer you are getting x, because अभी भी आंसर unknown है. आंसर केवल उन्हीं वैल्यूज के टर्म्स में आना चाहिए जो वैल्यूज हमारे क्वेश्चन में गिवन है. और इस केस में जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है वो v1 और v2 है. आंसर v1 और v2 के ही टर्म्स में आना चाहिए. So assumption number 1 is that the distance between A and B is given as 2s. So that this distance is s and this distance is s. Right? नहीं, x आंसर में नहीं आ सकता है ना वंश. So what is the total displacement of the particle? Now we know that displacement is a vector. Displacement is a vector which is drawn from the initial position to the final position of the particle. So the displacement vector of the particle is 2s I cap. Okay, I'm using I cap. You can use east. You can use 0 degrees or whatever you want to use. Yes, Abhijit, correct. 2s I cap divided by the time taken by the particle to go from A to B. Now, if you look at this part of the motion, what is the time taken by the particle to execute this part of the motion? Time is equal to distance upon speed. So time is equal to distance upon speed. राइट. और यहाँ पे हम स्पीड और डिस्टेंस सब यूज कर सकते हैं क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में है और यूनी डायरेक्शनल है. इसलिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड सब सेम है. और ये सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन में जो टाइम टेकन होएगा दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड एस अपॉन v. Therefore, for the total time, I get s upon v1 plus s upon v2. और यहाँ से s कैंसिल हो गया और अब सिर्फ थोड़ा सा मैथ्स बचा है. This will be equal to 2v1 v2 on v1 plus v2. Please notice that it is completely and absolutely different from the average or from the the numerical average का expression जो आप expect कर रहे होगे v1 plus v2 by 2. I mean this is like a normal thing to expect. अच्छा average velocity निकालने आ जाए, add करके divide कर दो. लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं करता है
क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन ही बिल्कुल डिफरेंट है. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2. हाँ भाई तरुण बोलो. सर वो जो पिछले वाला क्वेश्चन है दिखा सकते हैं एक बार? कौन सा पिछला वाला? कौन सा पिछला वाला? ये वाला? हाँ, तो इसमें मिड पॉइंट में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी? हाँ, मैंने बीच में क्वेश्चन पूछा ना. मैंने बीच में क्या क्वेश्चन पूछा? मैंने पूछा कि जिन लोगों ने कर लिया है मेरे को बताओ कि ये इम्पॉसिबल क्वेश्चन क्यों है. दिस मोशन इज रियली नॉट पॉसिबल, right? And the correct answer was given, and the correct answer is that वेलोसिटी अचानक से चेंज नहीं हो सकती है. अब ऐसा क्यों है वो हम देखेंगे जब हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, लेकिन वेलोसिटी अचानक से चेंज नहीं हो सकती. तो ये क्वेश्चन में मिड पॉइंट पे वेलोसिटी एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं है. मिड पॉइंट से जस्ट पहले वेलोसिटी की वैल्यू v1 है और मिड पॉइंट के जस्ट बाद वेलोसिटी की वैल्यू v2 है. लेकिन एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है वो तो नहीं मालूम. आया समझ में? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. हाँ भाई, सेकेंड वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ. सो पार्टिकल ट्रेवल्स अगेन इन ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी और ये सब मैं इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूँ. तो क्वेश्चन 2 हमें ये बोलता है कि ये पार्टिकल ट्रैवल सच दैट 1/6 of the distance is traveled with velocity v1. 1/6 of the distance is traveled with velocity v1. So this distance s by 6, this distance 5s by 6. पार्टिकल जब तक यहाँ और यहाँ के बीच में था तो इसकी वेलोसिटी v1. इसके बाद से ये क्वेश्चन बोलता है दैट इन द रिमेनिंग जर्नी, मतलब अब जो जर्नी बची है 1/6 तो उसने कंप्लीट कर लिया v1 वेलोसिटी. अब जो जर्नी बची है उसमें दो चीजें आएंगी. पहला कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है और दूसरा कितना टाइम लगेगा. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है दैट इज 5/6s. कितना टाइम लगेगा दैट इज अननोन, वी डोंट नो. सो इन द रिमेनिंग जर्नी 2/3 ऑफ द टाइम, मतलब कि अगर रिमेनिंग जर्नी 3 सेकेंड की थी तो उसमें 2 सेकेंड ये वेलोसिटी v2 से चला और 1/3 ऑफ द टाइम वेलोसिटी v3 से चला. So what this means is that I don't know at what distances the velocity was v2 and then the velocity was v3. But if the time here is t, then the time here is 2/3t and the time here is t/3. Okay, ये आ रहा है डायग्राम सबको समझ में? So the average velocity vector
is equal to displacement upon time is equal to एस आई कैप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एस आई कैप है। अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी तक का वेक्टर है, जिस एस आई कैप मैंने एस